Hello friends, welcome to Cherish to Learn. So today we will study the constitutional development of India. तो तार किछि MCQ आमे करिया. The most important MCQ देखिबा आमे the constitutional development of India ru which will be helpful for upcoming competitive exam like OCS prelims, OMAS, High Court ASO main and OSSC CGL PO and more. So let's start the class. The first question is the Constituent Assembly of India was formed under which Act? The Government of India Act 1935, the Cripps Plan 1942, the Cabinet Mission Plan 1946 and the Indian Independence Act 1947. The Constituent Assembly को प्लान अनुसार हेतला ना द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 अनुसार कोन हेतला हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएट करा जायतला. Then next question देखिबा हमें the Constitutional Assembly of India was formed on which date? को डेट रे फॉर्म हेतला 10 जून 9 डिसेंबर 26 नवंबर 26 डिसेंबर को डेट हबो एटा 9 डिसेंबर 1946 रे कोन हेतला ना फॉर्म हेतला एटा 9 डिसेंबर 1946 रे Constituent Assembly फॉर्म हेतला. Then next question is who among the following was the first to present the idea of Constituent Assembly to frame a constitution for India? Constituent Assembly किए आइडिया देथिले तो constituent बनया पे कोन हला Constituent Assembly फॉर्म करिया फर्स्ट किए कहितले स्वराज पार्टी इन 1934, कांग्रेस पार्टी इन 1936, मुस्लिम लीग इन 1942, द ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1946 रे तो एटा कोन हबो ना स्वराज पार्टी फर्स्ट कहितले 1934 रेतला स्वराज पार्टी कहितला Constituent Assembly फॉर्म करिया पे फॉर Constitution of India. The President of Executive Council, the Vice President of Executive Council in the interim government formed in 1946 was Vice President किए थे Executive Council रो interim government रे ना जवाहरलाल नेहरू, एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालचारी एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. तो अब कोन ना जवाहरलाल नेहरू थे Vice President थे. Then who was the chairman of Provincial Constitution Committee of Constitutional Amendment? Provincial Constitutional Committee किए chairman थे? तो यार आंसर कौन हबो ना सरदार पटेल. प्रोविंस अछि माने सरदार पटेल ही हबो. Which of the following statement is not true about the Constituent Assembly? It was not based on adult franchise. It was an outcome of direct election. It was a multi-party body. तो এটা কোন হবো मल्टीपार्टी बॉडी एंड इट इज फंक्शनड थ्रू मेनी कमिटीज. तो एटा कोडा हबो आंसर हबो 1 एंड 2 अछि 2 एंड 3 अछि 1 एंड 4 अछि एंड 1 2 3 4 अछि. तो आंसर कोन हबो ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को टाइप रो थिला. इट वाज नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रैंचाइज. एटा हबो एटा ठीक अछि अडल्ट फ्रैंचाइज अनुसार बेस नथिला एंड कोन हला ना इट वाज नॉट an outcome, it was an outcome of direct election. एटा मध्ये ठीक अछि. तो करेक्ट आंसर कोन हो ना 1 एंड 2 हो करेक्ट आंसर हो. तो कोन एटा पार्टली इलेक्टेड थिले बट मल्टी पार्टी बॉडी एटा तो हबो नै मेनी कमिटी भी सेटा हबो नै. तो 1 एंड 2 ही हबो यार आंसर. it was not based on adult franchise and it was an outcome of direct election हबो. Under which of the following act did Indian Legislative Assembly get the power to debate over the budget? को act रे budget ऊपर debate करा जाई परिला. को act थारु हेला एटा कोन हबो हेटा Indian Council Act 1861, Indian Council Act 1892, Indian Council Act 1909 and Government of India Act 1919. तो आंसर कोन Indian Council Act 1892 रु budget ऊपर debate करा जाई परिला. Then देखिया who was the chairman of the Constituent Assembly of India? Constituent Assembly रो chairman के थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थिले कोन Constituent Assembly रो chairman थिले. तारे who among this person was not a member of cabinet mission? Cabinet mission member के नथिले विलियम वुड, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एबी अलेक्जेंडर. आंसर कोन हबो ना विलियम वुड नथिले कैबिनेट मिशन रो मेंबर नथिले विलियम वुड.
then the division of power provided for in the constitution of India is based on plan method in Morley-Minto reform, Montagu-Chelmsford Act, Government of India Act 1935, Indian Independence Act 1947. एटा कोन हो ना डिवीजन ऑफ पावर को आसला ना मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म रे हितला 1909 रे मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म सॉरी डिवीजन ऑफ पावर फर्स्ट आसला 1935 रे सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे आसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे आसला that who among the following was the chairman of Union Constitution Committee chairman of Union Constitution Committee किए थिले तो यूनियन अच्छी माने कोन हबो जोडी यूनियन में मैक्सिमम जगह रे यूनियन थिले जेडी जवाहरलाल नेहरू ही होउची यूनियन जो थिबो सेडी जवाहरलाल नेहरू मैक्सिमम जगह रे होउची डॉक्टर अंबेडकर अछंती कृपालिनी अछंती जवाहरलाल नेहरू अछंती कृष्णस्वामी तो आंसर हबो कोन जवाहरलाल नेहरू यूनियन जोडी मैक्सिमम जगह रहउची सेडी जवाहरलाल नेहरू ही तारो chairman होउचन तार consider the following statement the constitution of India was adopted by the Constituent Assembly of 20 Assembly on 26 November 1949 the constitution of India came into force on 26 January 1950 so which of the following statement are correct the correct code हबो ना Constitution adopted है के 26 नवंबर 1949 ठीक अछि एटा आउ came into force के वेला 26 January 1950 तो both A and B are correct both A and B are correct then what was the ratio of population and the number of representative for determining the number of member of allocated to each province in the Constituent Assembly under cabinet mission plan तो पॉपुलेशन टा केते रहउतला ना 10 लाख ही थिला 10 लाख पर 10 लाख पर्सन तो प्रति 10 लाख रे जण लोक प्रतिनिधि निर्वाचित होतले 10 लाख लोक में जण प्रतिनिधि in which of the following act was made the provision for setting up Supreme Court in Kolkata regulating Act 1773 Peers India Act 1784 Charter Act 1813 Charter Act 1833 तो को एक्ट रे कलकत्ता रे सुप्रीम कोर्ट हेतला ना रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 सुप्रीम कोर्ट के हेतला 1774 रे हला सुप्रीम कोर्ट का 1773 एक्ट था 1774 रे सुप्रीम कोर्ट हे गेला then which of the following is a wrong statement about the Constituent Assembly wrong कोटा it functioned through a large number of committee of which drafting committee was the most important एटा ठीक अछि then due representation was ensured for minority communities like Christians Anglo-Indians and Parsis एटा भी ठीक अछि minority में थिला it was elected on the basis of universal order franchise एटा नथिला एटा ही wrong अछि ए स्टेटमेंट टा wrong अछि the process of its election was based on 6th schedule of act of 1935 एटा मजा ठीक अछि तो wrong कोटा हबो it was elected on the basis of universal order franchise ही wrong हबो तार 16 देखिबा तो 16 कोन देछि ना फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थिले फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन के थिले एचसी मुखर्जी एटा लिखा हिनी तार ऑप्शन गुडा तो फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन के थिले एचसी मुखर्जी तो ए हबो कोन 4 हबो ए हला 4 then B हबो कोन द ओनली ओरिजिनल कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ओनली ओरिजिनल मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी के थिले ना के मुंशी B हबो 3 सी हला कोन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ राजस्थान नु किए करथिले ना भिट्टी कृष्णामाचारी सी हबो 1 द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमिटी किए थिले डी हबो कोन 2 हबो जवाहरलाल नेहरू हबो तो फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किए थिले
ना एच.सी. मुखर्जी. द ओनली ओरिजिनल कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी किए थे ना के मुंशी. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर रिप्रेजेंटिंग स्टेट ऑफ राजस्थान किए थे वीटी कृष्णामाचारी. चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमिटी किए थे जवाहरलाल नेहरू. देन देखिए 17 देखिए. When did Constituent Assembly form the drafting under the chairmanship of B.R. Ambedkar? Constituent ड्राफ्टिंग कमिटी केबे फॉर्म हेतला बी आर आंबेडकर के नेतृत्व रे 13 डिसेंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जनवरी 1947, 29 अगस्त 1949. आंसर हो कोन 29 अगस्त 1949 रे हेतला. 29 अगस्त 1949 रे. In the context of history of India, the member of the Constituent Assembly कौन है? Member of Constituent Assembly directly elected by the people of those provinces, nominated by Indian National Congress and the Muslim League, elected by Provincial Legislative Assembly, selected by the government for their expertise in constitutional matters. एटा कौन आंसर हबो ना इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली होतले. डायरेक्टली तो इलेक्टेड हो नथिले किंतु कोन हला ना इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो कोन थिले मेंबर माने कोन थिले पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड. पार्टली इलेक्टेड तो नॉमिनेटेड को जगह होतले नॉमिनेटेड होतले को जगह प्रिंसली स्टेट रे. नॉमिनेटेड को होतले प्रिंसली स्टेट रे नॉमिनेटेड होतले प्रिंसली स्टेट रे. The first draft of the Indian Constitution was prepared by first draft of Indian Constitution की प्रिपेयर करते बी आर आंबेडकर, बी एन राव, के संथानम, के मुंशी. तो आंसर हो कौन बी एन राव. फर्स्ट ड्राफ्ट की प्रिपेयर करते बी एन राव. In which of the following year was the Federal Court of India established? Federal Court of India केबे एस्टैब्लिश हेतला ना 1937 रे. सुप्रीम कोर्ट केबे हेतला ना 1784 हेतला जोटा 1784 रे 1773 एक्ट जोटा थिला ता अंडर हेतला सुप्रीम कोर्ट. किंतु फेडरल कोर्ट केबे हैला ना 1937 रे हेतला. The inaugural session of Constituent Assembly of India was chaired by. Inaugural session of Constituent Assembly किए चेयर करथिले राजेंद्र प्रसाद, सचिंद्र सिन्हा. तो आंसर हो कोन सचिंद्र सिन्हा ही चेयर करथिले. In the context of colonial rule in India, the Ilbert Bill aimed at putting on unequal footing Indian and European so far as the penal jurisdiction court was concerned. The putting strict restriction vernacular press act because it havani holding the administrative service examination in India, so native Indian could permitting native Indian to keep arm amending. So basically answer A ही हबो. The putting on unequal footing Euro Indian and European so far the penal jurisdiction of court concerned. Ilbert Bill 8 am रखिला. So who among the following presented the objective resolution in the Constituent Assembly? Objective resolution किए करथिले जवाहरलाल नेहरू जोडा कि कोन परवर्ती काल रे कोन हला फंडामेंटल राइट पई करथिले. ऑब्जेक्टिव resolution कोन हला ना फंडामेंटल राइट पई fundamental right objective resolution. Chairman of drafting committee of the Constitution Assembly of India. Chairman of drafting committee किए थिले ना बी आर आंबेडकर थिले. Chairman of drafting committee थिले बी आर आंबेडकर. How were the member of Constitution Assembly elected? Constitution Assembly member केटा repeated is directly by the people, by nomination of INC, by nomination of ruler of Indian state, by the provincial legislature. तो आंसर कौन है एटा ना बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेचर. डायरेक्टली बाय तो पीपल हो नथिले एटा हो एटा बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हो. How long did Constitution Assembly take to frame India's Constitution form में केते दिन टाइम लागितला? 2 वर्ष 11 मास 17 दिन लागितला. तो एक्चुअली एटा 18 दिन 17 दिन लिखा हो. A federal system and the diarchy at the center was implemented by
को एक्ट रे फेडरल सिस्टम एंड डायरकी इंप्लीमेंट करा जायतिला तो एक्ट ऑफ 1935 तो फेडरल सिस्टम डायरकी एक्ट सेंटर कोड हैला ना 1935 एक्ट थिला पूर्व कोन थिला डायरकी एक्ट स्टेट थिला इन सेंटर रे करा गला Which of the following statement about the making of Indian Constitution is correct? Nehru resolution was adopted by Constituent Assembly had an impact on making of the Constitution. Preamble fulfills very significant purpose. The Constitution is mandated by the people of India. The head of the government of indirectly elected by the people. Koda haba correct haba eta? Now Nehru resolution was adopted by Constituent Assembly had an impact on the making of Constitution. Eta ठीक अछि. The preamble fulfills very significant purpose. एटा भी ठीक अछि. Then the constitution is mandated by the people of India. एटा भी ठीक अछि. The head of the government is indirectly elected by the people. एटा भूल अछि. एटा directly हबो. तो आंसर हबो कोन ना 1 2 3. आंसर हला 1 2 3. By which act was the diarchy established at the center? Center रे diarchy के भेटला 1935 act रे पढिले recently. Diarchy at center के 1935 act. Government of India Act of 1935. The proposal to make India's constitution by an elected constituent assembly was given by the Simon Commission, by the Government of India Act 1935, by the Cripps Mission, by the British Cabinet Delegation. तो एटा Cripps Mission ही देथिले. Cripps Mission proposal देथिले कोन Constitution Assembly कोन हो गोटे elected Constitution Assembly द्वारा form of Constitution. Who was the constitutional advisor at the time of making of Indian Constitution? Constitutional advisor किए थिले ना डॉक्टर बी आर आंबेडकर थिले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव, के मुंशी. तो बी एन राव थिले कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर. देखिए the provision of establishing an all India federation was included in all India federation include code हेतला ना Government of India Act 1935, August proposal of 1940, the Government of India Act 1919 and Cabinet Mission proposal 1946 रे केबे हेतला एटा ना Government of India Act 1935 रे कोन हेतला ना all India federation हेतला include. Who was chairman of advisory committee for fundamental right and minorities set up by Constitution Assembly? Fundamental right advisory committee किए थिले member ना सरदार पटेल थिले. Minorities. Under which of the following act was Burma separated from India? Burma को act रे separate हेतला India ठारू. Indian Council Act 1909 गोटे Government of India 1919 और Government of India 1935 रे हेतला. बर्मा केबे सेपरेट हेतला 1935 रे Government of India Act. Which of the following is are the main feature or features of Government of India Act of 1919? The main feature कौन थला Government of India Act or provision of diarchy in the executive government of provinces. तार कौन थला एटा ठीक अछि. The provision of separate communal electorate for Muslim एटा भूल अछि तो एटा त पूर्व हेतला ऑलरेडी. तापर ट्रांसफर ऑफ लेजिस्लेटिव पावर फ्रॉम सेंटर टू प्रोविंसेस एटा ठीक अछि. तो आंसर कोन हबो ना 1 and 3 हबो आंसर. How many sessions of Constitution Assembly of India were held for making Indian Constitution? तो how many session हेतला 12टा सेशन हेतला टोटल. टोटल 12टा सेशन हेतला. How many other members were there in the drafting committee chaired by B.R. Ambedkar? Drafting committee total केते जण मेंबर थिले
ना 6 जन अलग मेंबर थे अदर मेंबर 6 अदर मेंबर थे क्या बी आर आंबेडकर को छाड़ी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द रेसिडुअल पावर वर गिवन टू रेसिडुअल पावर क्या दिया जाता गवर्नर जनरल को दिया जाता रेसिडुअल पावर दिया क्या गवर्नर जनरल को दिया जाता तर व्हिच इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सो सिग्निफिकेंट व्हिच इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कोन पे एते सिग्निफिकेंट थिला को रीजन पे थिला ना इट इज द मेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एटा ही इंपोर्टेंट मेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थिला कोन 1935 एक्ट इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाइकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय बाइकैमरल इंडियन लेजिस्लेचर को एक्ट रहितला काउंसिल एक्ट 1892 काउंसिल एक्ट 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रहितला कोन बाइकैमरल लेजिस्लेचर रहितला हु अमंग द फॉलोइंग वाज मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी के थिले एन गोपाल स्वामी जवाहरलाल नेहरू आलाडी कृष्ण स्वामी अय्यर सरदार पटेल के थिले एन गोपाल स्वामी थिले आ थिले आलाडी कृष्ण स्वामी अय्यर भी मध्य थिले आंसर हो कोन 1 एंड 3 हो ड्राफ्टिंग कमिटी रे के थिले ना गोपाल स्वामी थिले एंड आलाडी कृष्ण स्वामी आया थिले तो आंसर हैला कोन 1 एंड 3 तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a significant and permanent element adopted by government of India in 1935 a written constitution elected and accountable representative for the legislature consideration about one federation nomination of official member for the legislature तो कोडा हबो significant हबो the written constitution thila it's not a significant and permanent element a written constitution for the country the accession kon hela under the Wavell plan the number of Hindu and Muslim member of executive council was to be equal reason kon hela Wavell was of the opinion that this would avoid India's partition तो एटा कोन हो द एसोसिएशन इज करेक्ट बट द रीजन इज रॉन्ग सेति पई नथिला कारण द प्रेसिडेंट्स पावर टू इश्यू ऑर्डिनेंस इज इंस्पायर्ड बाय द को एक्ट द्वारा प्रेसिडेंट पावर कोन ऑर्डिनेंस इश्यू करथिले तो 1935 एक्ट ही हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 द्वारा प्रेसिडेंट कोन करले ऑर्डिनेंस इश्यू करले Who among the following was not a member of the Constitution Drafting Committee? Drafting Committee रो किए मेंबर नथिले तो मोहम्मद सदातुल्ला थिले के मुंश थिले एके आया थिले तो नेहरू ही नथिले ड्राफ्टिंग कमिटी रो मेंबर Who among the following was not a member of first interim national government? National government रो के मेंबर नथिले interim government रो 1946 रे जो गवर्नमेंट हितला 1946 रे interim government हितला 1946 रे तार किए नथिले तार पाड़ले राजगोपालाचारी राधाकृष्ण राजेंद्र प्रसाद जगजीवन राम तो कौन हम ना राजेंद्र प्रसाद नथिले Which of the following was not among the main feature of the Government of India Act 1935? The Act contained the provision for All India Federation. The residual subjects were allocated to provincial legislature. This was beginning of provincial autonomy. It ended the diarchy at the provincial level and implemented. तो कोड है वो एटा ना residual subject were allocated to provincial legislature. एटा नथिला. Who was the elected permanent chairman of the Constituent Assembly constituent at the Center Assembly? Elected permanent chairman के थिले? तो राजेंद्र प्रसाद ही थिले. Elected permanent chairman थे के राजेंद्र प्रसाद. Which act made it possible for Indians to take part the country's administration में कोई एक्ट रे अलाउ कला इंडियन मानन को तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अलाउ करथला The Indian Constitution was adopted by Constituent Assembly, British Parliament, Governor General and Indian Parliament. तो कौन होगा ना Constituent Assembly ही करथला The Constitution of India was adopted by Constituent Assembly. केबे अडॉप्ट हेतला Constitution ना 26 नवंबर 1949 रे अडॉप्ट हेतला लागू लागेबे 26 जनवरी 1950 रे. The years of Dr. B.R. Ambedkar's birth and death were केबे तो अंबेडकर केबे birth केबे हेतला death केबे हेतला अंबेडकर कर
तो 1891 रे तांकर बर्थ होला, डेथ होला 1956 रे। When did the Constituent Assembly of India adopted the national flag? National flag केबे अडॉप्ट हेतला हमरो 22 जुलाई 1947 रे नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड हेतला। When the state emblem को केबे अडॉप्ट हेतला हमरो एटा 26 जनवरी 1950 रे हेतला स्टेट एम्ब्लेम, किंतु आर फ्लैग केबे हेतला ना 22 जुलाई 1947 रे हेतला। B.R. Ambedkar was elected to Constituent Assembly from who to B.R. Ambedkar elected हेतले Constituent Assembly को बॉम्बे प्रेसिडेंसी रो इलेक्टेड हेतले। Below the given two statement, the Constitution assertion कौन है? The Constitution of India meet the country's need. Reason कौन है? It is called an adopted Constitution. Which of the following is true? कोटा हवा एटा assertion अछि, reason अछि, true कौन? Both A and R होछि true. Both अछि true, किंतु कौन? R not correctly explanation of A. तो explain करूनी, reason टा same नो। When did Constitution of India came into force? Constitution came into force है 26 जनवरी 1950 रे। adopted हेतला केबे 26 नवंबर 1949 कि came into force है 26 जनवरी 1950 रे। Who was the chairman of Flag Committee of Constitution Making Council? Flag Committee रो किए थे मेंबर? राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद थे Flag Committee रो मेंबर थे। Who was the who enacted the Constitution of India at 26 November 1949? के enact करथिले Constitution of India को के enact करथिले? तो Constituent Assembly ही करथिला। Consider the following statement: the deliberation of third roundtable conference fructified as the passing of Government of India Act 1935. The Government of India Act 1930 provided for the formation of All India Federation based on Federation of Provinces of British India and Indian Princely State. So, which statement are correct about that? Both 1 and 2 are correct. Both are correct over. Then consider the following statement: the Constituent Assembly of India adopted the design of national flag on 22 July 1947. There are 21 spokes in the middle. 21 spokes in the middle of national flag. The length and breadth of national flag are 3:4 ratio, in the ratio of 3:4. तो यार आंसर कौन होगा ना? ओनली 1 ही ठीक होगा। तो Constituent Assembly of India adopted the design of flag के adopt हेतला 1947। तो एटा 21 होबो नहीं, 21 स्पोक होबो नहीं। तो लेंथ एंड ब्रेथ रो रेशियो केते थिला ना 3:2 होबो एटा। 3:2 होबो एटा, 3:2 कारण 90 सेंटीमीटर आउ 60 सेंटीमीटर थिला लेंथ आउ ब्रेथ रो रेशियो। लेंथ आउ ब्रेथ रेशियो केले 90 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर, तो 3:2 होबो। तो एटा जो अछि 21 स्पोक होबो, 24 स्पोक थिला, 24 होबो एटा। तो आंसर कोन होबो ना? ओनली 1 होबो करेक्ट होबो। Then 63 देखिए 26 January was chosen the date of commencement of Constitution of India because कौन में 26 January कौन में सेलिब्रेट करा जाइतला? And this day was observed by the Congress as the Independence Day 1930. एटा फर्स्ट ହେଲା पूर्ण स्वराज दिवस ओडा तला, एटा ही आंसर होबो, राइट आंसर होबो। एटा 26 January के एत में सिलेक्ट करा जाइतला। In which year was जनगण मन adopted as the national anthem? जनगण मन केबे अडॉप्ट कराइतला ना 1950 रे हितला, अडॉप्टेड हितला जनगण मन 1950 रे हितला। The following talked of postponing adult franchise for 15 years in the Constituent Assembly. किए कहितले 15 years franchise कोन adult franchise, postponing of adult franchise for 15 years in the Constituent Assembly किए कहितले? एटा हबो ना मौलाना आजाद कहितले।
मौलाना आजाद कहते हु सेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया एटा किए कहते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होची कांग्रेस आ कांग्रेस होची इंडिया किए कहते एटा ऑस्टिन कहते ग्रानविल ऑस्टिन कहते कौन ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होची कांग्रेस आ कांग्रेस होची इंडिया ग्रानविल ऑस्टिन कहते The who among the following suggested that Indian National Congress was a party should be dismantled after India's independence एटा महात्मा गांधी कहते डिसमेंटल होगा ପାଇଁ कांग्रेस को इंडिपेंडेंस पर महात्मा गांधी ही कहते हाउ मेनी वुमेन मेंबर आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केते जण वुमेन मेंबर थिले ना 15 थिले वुमेन मेंबर थिले केते 15 जण थिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे In their nationalist reaction, the makers of the Indian Constitution have understand the interest and sentiment of minority. This is the statement of कार किए कहते एटा मोरिस जोन्स हार्डग्रेव जूनियर अलेक्जेंड्रोविच एंड इवोर जेनिंग्स तो इवोर जेनिंग्स ही कहते अंडर एस्टिमेटेड द कोन सेंटिमेंट ऑफ माइनॉरिटीज से कहते किए कहते इवोर जेनिंग्स कहते So the class is complete. Hope it would help in the exam. So thank you. Thank you. Please like, share and subscribe. So thank you.